नमस्कार दोस्तों, फिर से आगे कर दिया बाजा में। इसी चाबी का काम करते हैं। बेलो लोग जमा दिए हैं, इसका ड्यूटी हो सके तो कल डल जाएगा। अब इसका थोड़ा सा देखते हैं खोल के क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या काम करना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा इसमें।
पीस तो बदलना पड़ेगा, इसका पीस भी जंग लगा हुआ है, क्या पता जगह भी ख़राब हो गया होगा। डर लगता है कमानी ना टूटे, क्योंकि इसका कमानी जल्दी मिलता नहीं है, और दूसरे कमानी का बनाएंगे तो छोटा पड़ जाता है। जंग तो इतना लगा हुआ है कि भरोसा नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। टूटेगा तो परेशानी बढ़ेगी, फिर भी करना तो है ही, चाहे जैसे मर्जी करें। सेकंड हैंड पियानो है क्या? ना, इसे मिल नहीं जाएगा। कितना बजट है? 5-6 बोलते हैं। हैं? 5-6 7-8 तक ले आ खींच के। 7-8 तक तो आ जाएंगे। ये बना कर दे देंगे, ड्रामा बना कर दे देंगे। 8 के बाद कर ले, एडवांस को कर फटाक से। गुरुजी के पास आ रही है और सीखने। एक आंटी है, मतलब कोई 60 साल की है। उनको पियानो चाहिए, हारमोनियम दिलवा के। ये क्या वो शौक है? अरे वो जनकपुरी है ना, वहाँ पे वही अमीर लोग आते हैं। कितने स्टूडेंट आ गए वहाँ पे अभी तक? हैं? कितने स्टूडेंट आ गए? 8। सौ लोग तो पूछ के गए होंगे अभी तक। पूछने वाले तो हमारे पास तो ऐसे में 500 बाजे का ऑर्डर है अभी तक। पूछने वाले के हिसाब से 500 बाजे से कम ऑर्डर नहीं है। कर देना भैया, चाहिए मेरे को, बच्चे सीखेंगे। उसके बाद गायब हो जाता हाँ, है। बच्चे भी गायब, बाप भी गायब। मेरे मधुमक्खी ने काट लिया था अंकल। ये कुछ सूजा पड़ा है। मधुमक्खी ने? हाँ यार काटा था, वो पीले वाली ततैया ने। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये सूजा पड़ा है, जहाँ तक लाल है ना, पूरा यहाँ तक। इन्फेक्शन फैल गया है इसका। नहीं वो तो लाइन पे आ जाएगी, वो 2-3 दिन में।
पुरानी लकड़ी में ये खासियत होती है, अभी तक टेढ़ा नहीं हुआ। अब तो लकड़ी होता था टेढ़ा हो गया होता। ये सब लगाने हैं नया, सब चेंज करेंगे। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो टुकड़ा में बनाए करेंगे, और शायद आने में लेट भी लग सकता है क्योंकि बीच बीच में और भी कई काम हो जाते हैं। भाई कोशिश तो ये रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि कस्टमर का बार बार फ़ोन आ रहा है, कब आओगे भैया कब आओगे। तो कोशिश में है जितना जल्दी हो जाए, और जल्दी कर भी नहीं सकते ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, नाजुक काम है। थोड़ा सा ताकत लगाएंगे चाबी टूट जाएगी, तो पतली पतली चाबी होती है।
सागवान का रीड जो होता है ना, सागवान का रीड बोर्ड जो होता है वो 2 परत में होता है। तो ऊपर वाला परत जो है ना, जहाँ जहाँ फटा हुआ है ये उखड़ा हुआ है। अब डर ये लग रहा है कहीं ये लीकेज ना हो। ऊपर का तो भर देंगे, अंदर का मुश्किल हो जाता है, उसके लिए रीड खोलना पड़ जाता है। अब देखते हैं, जैसा संभव हो करना तो पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को क्या पता भाई, उनको तो बस बजना होगा, उनको तो सिर्फ बजने से मतलब है, लेकिन मजबूती तो हमको देखना है। तो यही सब है। बाकी कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। दोस्तों आज दूसरा दिन है। जिसमें रीड बोर्ड क्रैक था ना, सब फेविकोल भर दिया हूँ। तो थोड़ा सा ना ये नीचा नीचा लग रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। अब इसको रंदा से छील के इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के चाबी सही से बैठेगा। दूसरे में चाबी का भी काम करना है अभी। इसमें रहती है हमें।
रहा होगा। ये जहाँ जहाँ काला है वो डाउन है, जो छीले हैं ना सफ़ेद सफ़ेद है ये ऊपर है अभी। उसको लेवल करना है पूरा। सागवान की लकड़ी में ना कुछ मट्टी जैसा अंश होता है, कुछ ऐसा जो धार को जल्दी ख़राब कर देता है। देख रहे सारा बराबर हो गया। अभी भी यहाँ पे गड्ढा है। अरे फेंका किसने? हो गया दोस्तों बराबर। ये थोड़ा सा है, ये रेग मारने का टाइम हो जाएगी। और इस पे चाबी ना बिल्कुल चिपक के बैठेगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा। हवा लीकेज की संभावना खत्म।
तो इसे पॉलिश कर देंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसकी सफाई करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल चकोर साइज में, ये नहीं कहीं गोल हो जाए, बराबर बराबर एकदम सफाई करनी है। और कितना फिनिशिंग से हुआ है, ऐसे सबको करना है। इसका जो पेंच है ना, ये भी पीतल का है, ये भी इसको खोल के साफ कर देंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा। जब इसकी सफाई करेंगे फिर बनाएंगे।
दोस्तों ये लेदर है और इस पे हमने ना ये कपड़ा चिपका दिया है। इससे क्या होगा, इसकी लाइफ जो है ना ज़्यादा हो जाता है। और ये कलकतिया बाजा में जो है ना लेदर बदलना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए उसमें ऐसा लगाते हैं ताकि लंबा टाइम के लिए चले। अब ये मान लो कि हमको तो लग रहा है कि 70 साल पुराना बाजा है ये, है ना। और इसमें पता नहीं पीछे रिपेयरिंग हुआ है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये है कि उसमें लेदर पहले का जो लगा हुआ था वो सही लेदर लगा हुआ था, इसलिए इतना नहीं चल गया, है ना। हम भी लगा रहे लेदर सही है, लेकिन ये कपड़ा लगा दिए हैं तो इससे और ज़्यादा सही हो जाएगा मतलब।
इसी में से यहाँ लगाने के लिए काट लेते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा पीस लगेगा हर एक चाबी पे। वो एक रजिस्टर भी काम करता है, जैसे कि मान लो कि जंपिंग हो, आवाज़ ना करे, उस टाइप के। वही सर कुछ जुगाड़